The other plains in Brazil are located to the southwestern part of the highlands. They form the source region of Paraguay and Parana rivers. The source region of Paraguay slopes towards the south, while the source region of Parana slopes towards the southwest. Now, when we talk about this, we have to see the map, otherwise, we will not understand anything. See here, now the other part of the plains lie in this region, southwestern part region, and these are the sources of the river of Paraguay river and the Parana river. The Paraguay slopes towards the south and the Parana river slopes towards the southwest. Now next, Pantanal. It is the world's wettest Pantanal. It is the largest wetlands in the world, and it lies to the southwest part of Brazil. It is a region of swamps and marshes in northwestern Mato Grosso do Sul in Brazil, and it extends into Argentina too. Now ये जो रीजन है पेंटनल का, ये रीजन है स्वॉम्स और मार्शेज यानी कि दलदल और कीचड़ भरा इलाका है. वेटलैंड यानी कि वही होता है दलदल और कीचड़ भरा. ओके. Now we come to the islands of Brazil. Besides the mainland, some islands are also included in Brazil. They can be classified into coastal islands and marine islands. So Brazil के islands can be classified into coastal and the marine islands. Most of the coastal islands have formed due to deposition. तो जो coastal islands form हुए हैं वो deposition से हुए, यानी कि जो मिट्टी बह के आती है और जमा हो जाती है उसी वजह से. देन मरीन आइलैंड्स वर अ पार्ट ऑफ द मेन लैंड. और जो मरीन आइलैंड्स थे वो ऑलरेडी जो मेन लैंड था उसका ही पार्ट था, तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे गॉट सेपरेटेड. नाउ दे आर मोर देन 300 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन लैंड इन द अटलांटिक ओशन. तो ये जो मरीन आइलैंड्स की हम बात कर रहे हैं वो 300 किलोमीटर्स दूर है in the Atlantic Ocean. Now these islands are mostly rocky and they are the top of the submerged mountains. तो ऑफ कोर्स आइलैंड एक सबमर्ज्ड माउंटेन ही होता है. तो ये जो आइलैंड हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो भी ज़्यादातर रॉकी है और दे आर सबमर्ज्ड इन द ओशन. Now the islands near the coast of South Atlantic Ocean are coral islands and they are called atolls. Now we have discussed this before also. We also have one island, Marajo Island, which we had seen, that is a coastal island. With this, the island is over. Then we come to the drainage part. Now, when we talk about the drainage system, we are talking about the flow of the rivers in that particular region. So now we are going to start with the drainage of Brazil. Now, when we are talking about Brazil, there are three major river basins. तो जब भी हम ड्रेनेज की बात करें ऑफ कोर्स देयर शुड बी रिवर्स विच ड्रेन समवेयर फ्रॉम समवेयर. सो इन ब्राज़ील देयर आर थ्री मेन रिवर्स. दोज आर द अमेज़न बेसिन, then the Paraguay Parana river system in the southwest, São Francisco in the eastern part of Highland, and other rivers at the coast. First we will do the Amazon basin. Now Amazon collects its headwaters यानी कि जो water Amazon में आता है it comes from the eastern slopes of Andes mountain in Peru. Okay, Peru is in the western side of Brazil. Now Amazon receives huge discharge. Amazon river में बहुत सारा पानी आता है. It is about 2 lakh meters per second. Now, as a result, Amazon washes off a load supplied to it from the catchment. तो जो भी मिट्टी या फिर सिल्ट जो भी बह के आता है वो पूरा अमेज़न रिवर वॉश कर देता है. इट डज़ नॉट लीव एनीथिंग दैट इज़ डिपॉजिटेड. तो इसकी वजह से सेडिमेंट्स जो भी है यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होते हैं. देयर आर डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज which is a characteristic feature of the river mouth areas is by and large absent in the mouth region of Amazon. क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आता है तो यहाँ पे इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बनते इस रीजन में. इंस्टेड वी फाइंड अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स डेवलप्ड अलोंग द माउथ. तो अपार्ट फ्रॉम दिस वी सी आइलैंड्स बीइंग डेवलप्ड इन अलोंग द माउथ ऑफ दिस अमेज़न and beyond the coastline of Atlantic Ocean. Now it will be interesting to note that at the mouth
the width of the Amazon channel is 150 kilometers. Okay, so you will get an idea of the width. Now 150 kilometers matlab it is given here to assume from your place to some other place till 150 kilometers. तो एक बहुत ही लंबा एरिया हो गया, तो इतना बड़ा है Amazon river basin. Then Amazon river is suitable for navigation. तो जो भी कोर्स है, जो भी एरिया अमेज़ॉन रिवर कवर करता है वो नेविगेबल है, यानी कि वहाँ पे हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं बाय शिप और बोट्स एक्सेट्रा. Then we come to the Paraguay Parana system. These two rivers are located in the southwestern part of Brazil. Paraguay, Parana here. Paraguay and Parana, southwestern part of Brazil. Then both the rivers form the catchment of River Plata in Argentina. तो एक कैचमेंट यानी कि यहाँ पे डिपोजिशन होता है और रिवर प्लाटा अर्जेंटीना में ये डिपोजिशन होता है. दीज टू रिवर्स एंड रिवर उरुग्वे इन एक्सट्रीम साउथ. कैन सी अ रिवर उरुग्वे in the south of the island collect the headwaters from the southern portion of the island. They collect it from the southern portion of the island, that is this from here. Okay, then we come to São Francisco. It is the third important river in Brazil. The entire basin of this river is within Brazil. São Francisco, you can see São Francisco here. It is the third important river in Brazil. It occupies the eastern portion. It is in the east. Then the rivers flow towards the north. You can see it is flowing towards the north. Okay, from here it is flowing towards the north. Many of you all must be getting confused कि ये जो rivers हैं यहाँ से start होके अंदर जा रहे हैं, but it is wrong. For those of you who do not know, यहाँ से originate होता है और यहाँ से वो सी में enter होता है. ओके, तो उल्टा नहीं जाना. ओके, whenever you read the map, rivers कभी भी सी में ड्रेन होते हैं, बाहर निकल जाते हैं. ओके, दे डोंट एंटर फ्रॉम हियर. ओके, तो यहाँ पे जो है साउथ फ्रांसिस्को जो नॉर्थ में जा रहा है. एंड सी यू कैन सी द एरोज ऑल्सो गिवन हियर, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. दीज आर गोइंग आउट, ड्रेनिंग आउट. ये जो है ड्रेनेज सिस्टम बता रहा है कि यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं सब रिवर्स. When we talk about São Francisco, it is taking a sharp eastward turn. You can see a sharp turn here towards the east and enters the coastal strip of the Atlantic Ocean. The river is navigable for a distance of about 250 kilometers in its downstream reaches. तो ये रिवर भी नेविगेबल है, यानी कि ये रिवर भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर भी हम नेविगेट कर सकते हैं. We come to the coastal rivers. Brazil has a number of short coastal rivers. The coastal area being densely populated, these rivers attain significance. तो भी कोस्टल एरियाज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड, यानी कि ये जो रीजन है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लोगों की, इसके लिए ये जो कोस्टल रिवर्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. देन रिवर Paranaíba and river Itapecuru flowing northwards meet the North Atlantic Ocean. You can see them over here. They meet the North Atlantic Ocean over here. Then the rivers that enter South Atlantic Ocean collect their headwaters along the escarpment. River Paraguaco enters the Atlantic Ocean near Salvador town. Here is the Paraguaco river must be in this area only. Okay, it enters the North Atlantic Ocean. I will show you another picture. It is not mentioned in this map. Okay, now with this we finish the drainage system of Brazil.